But yeah, I think dark chapters are also a very important part of your life for anybody, because that's when you are happy to see the light. आपको बताया जाता है एज एन एक्टर कि ये फिल्म होगा, राइट? बाद में अगर उसका मीडियम बदल दिया जाता है, वो एक्टर्स को बताया जाता है? Not really. मेरे हाथ में तो नहीं था कुछ भी. बताया जाता है, पर you can't do anything. You know, sometimes they sit with me and they talk to me about OTT. कि OTT, मैंने कहा यार ये बड़े प्रोड्यूसर वाले क्वेश्चंस है ना. तो मेरे से एक्टर की बात करो, यू टॉक अबाउट द कैरेक्टर आई हैव प्लेड. हाँ, मुझे ऐसा खुद लगता है कि हमारा मीडिया खुद बहुत स्टार और उनसे ऑब्सेस्ड है. यू नो, बहुत ऐसा स्टोरी फ्रेंडली, स्क्रिप्ट फ्रेंडली मीडिया इतना नहीं है. Hi, this is Avantika. Hi, this is Naveen Kasturia. And you're watching us on Subhojit's channel. ऑलराइट, क्या बात है. सो सबसे पहले ये चीज आप लोग नोट करके रख लो कि कोई भी चीज का अगर सीजन 2 आता है, इसका मतलब ये है कि सीजन 1 बहुत ही अच्छा वाला हिट हुआ है, विच इज वाई देयर इज अ सीजन 2 टू दैट. सीजन 2 यूजुअली मीन्स 2x द एंटरटेनमेंट, 2x द धमाका एंड 2x द ग्लैमर क्वोशंट हियर एज वेल विद अवंतिका एंड नवीन ओवर हियर. मजा आ रहा है कि इंट्रोडक्शन सुन के? Of course, thank you. That was such a nice introduction. Lovely. Glamour quotient था, दिल से निकला है. That is what it is. But he never gets to hear things like this. अरे वो छुपा रुस्तम है, I think. मैं पिक्चर्स का ग्लैमर क्वोशंट था. पिक्चर्स का ग्लैमर क्वोशंट हो. अलग से भी आप ग्लैमर क्वोशंट हो कि नहीं? आपको तारीफ वगैरह, डीएम्स वगैरह आते हैं कि नहीं? आप बताओ. क्यूट वाले. पता नहीं. क्यूट वाले. अच्छा क्वेश्चन. Even I want to know this. No, there's a song called Cute Volume 1. I don't know if you've heard it. I don't know if you guys have heard it. Have you heard it? You guys should watch that song. I was part of that. Cute Volume 1. तो उसके बाद से फिर वो It's based on another song which was called Anyone? I think he knows. यहाँ पे इंटरव्यू से लेके हम लोग जीके के जोन पे चले गए, but let's get back to the interview zone. That is what it is. Z5 में आ रहा है वापस सीजन 2 ऑफ मिथ्या. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बोल्ड में मैं देख रहा हूँ कि द डार्कर चैप्टर, राइट? What according to you in real life defines a dark zone, if I may ask both of you? In what way? It can be like, मेरे लिए वो एक होता है ना कि जिंदगी का डार्क चैप्टर था, या फिर it's a very dark space to be in. So what exactly defines dark? I'm not talking about अंधेरा, but आपके जिंदगी में dark क्या define करता है? Oh, that's hard, yeah. I think everyone has dark chapters in their life when they go through things in their space and their own journeys. It can be anything from a heartbreak to losing a loved one, to losing confidence in yourself. Which is a very important fact if you're an artist. अगर आप confidence lose करते हो, it's difficult to get it back? Again, I think it's very personal, yeah. सबकी journey अलग होती है. Sometimes it also depends why and how. Sometimes it's easier to lose gain the confidence back. Sometimes it requires a little external push to help you get there. But yeah, I think dark chapters are also a very important part of your life for anybody, because that's when you are happy to see the light. Oh yes, light at the end of the tunnel. That is what it is. आपके हिसाब से dark क्या है? What defines dark for you? यार, जो अगर अभी पास्ट में डार्क लगता है ना, जब आप उस मोमेंट पे थे, तो वो डार्क नहीं लग रहा था, I think. But as Avantika rightly said, yeah, it could be anything. It could be a heartbreak. It could be, a personal loss. So yeah, सभी जब भी आप लाइफ में लो हैं majorly, I think that उस फेज को आप डार्क फेज बोलेंगे. जब आप हमारे धंधे में बहुत हाईज लोज काफी फ्रीक्वेंटली होता है, बट इफ यू आर इन अ लो फेज फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड, then that is something which can be called dark. Yeah. You know, as far as professional front is concerned, मैं अभी यहाँ पे बैठा था तो मैं सुन रहा था
कि you've been doing work for such a long time and you started by being an AD, right? So you have literally got the basics right from the very beginning. You got your research done and everything. But coincidentally, in some way or the other, आप अगर फिल्मों में अगर आपने काम किया भी हो फिल्म सोच के, it eventually wasn't really a film, right? It eventually turned out to be a web series or something like that, which has its own charm, of course. It has played a huge role in the kind of love and adulation that you have got from people, touch wood. But आपने सोचा तो था उसको फिल्म होगा वो सोच के आपने किया था, राइट? द मैकेनिज्म, द अंडरस्टैंडिंग वाज दैट. इवेंचुअली इट वाज नॉट. वर यू अपसेट कि यार बिकॉज 70 mm का जो एक चार्म है, it cannot be replaced or compared with anything else, right? That's what I feel. Do you feel the same way? हाँ, उनमें से एक फिल्म I was really excited about it. I wanted it to come out in a form of a film, so I was upset about it. बट हाँ, अभी क्या कर सकते हैं यार. बट ये सब क्रिएटिव कॉल्स जो होता है कि आपको बताया जाता है एज एन एक्टर कि ये फिल्म होगा, राइट? बाद में अगर उसका मीडियम बदल दिया जाता है, वो एक्टर्स को बताया जाता है? नॉट रियली. हाँ, मेरे हाथ में तो नहीं था कुछ भी. बताया जाता है पर यू कांट डू एनीथिंग. यू कांट डू एनीथिंग, बट आपको बताया जाता है या यू डोंट इवन गेट टू नो? टाइटल भी बदल दिया और वो इतना टैकी सा रख दिया. मतलब I still cannot, when I talk about that film, I don't take the name of that film. I address it by the previous name. Because I don't like the title of that film. So because when I did that film, it was called something else. So हाँ, वो but ठीक है यार, it's I mean that happens. But उसके बाद फिर I think वो ये aspirant से पहले की बात है. तो हाँ, तभी मैं post aspirants, I think I was telling you that I've become very cautious about my choices. Yeah. So yeah. कि ऐसे randomly 360 degree change ना हो जाए. तभी I was talking about this ना कि release is very important because I've had such experience in the past. Yeah. True. I was rereading a few reviews of Mithya season 1 पहले का, and I remember our conversation. I remember our conversation as well. That was back, I think, virtually हुआ था हम लोग का. Yes, of course. But then this one, of course, adds a lot more speciality to it because ये in person है. But I was rereading some of the reviews. And वहाँ पे there was this one very interesting, जो कि simple word है, but आपके लिए बोला गया था कि Avantika's performance is layered with a deep sense of impact, right? Which is a great thing to hear for somebody who's starting out, right? When you were getting those reviews at that point of time, कभी-कभी क्या होता है कि when you're starting young, तो वो दिमाग में ज्यादा चढ़ जाता है, राइट? एंड you tend to बहुत मैं देखता हूँ काफी बहुत ही वो चढ़ जाता है. Did you feel that way at that point of time, या फिर लोगों ने आपको उस तरीके से फील कराया कि you have arrived and all that, because people around us get a lot more excited than perhaps what we are? मेरी फैमिली तो नहीं. Me and my brother, we keep joking about this, that everyone says, कि once you become a star, you become an actor, we are like, all we have to do is ring the bell and go home, and we are brought back to ground. That is definitely the case. मैं हो गई क्या बड़ी स्टार? बहुत arrogant हूँ. बन रहे हो अभी, जोर पे हो. Lady, come on यार. Obviously, that's why I'm. The real thing about being a star is when you're actually not arrogant, but then a lot of other people feel that you are arrogant. Wo is a defining medium in terms of arriving, I feel. But I would feel otherwise, in the sense, I was actually thinking about this the very other day because I'd seen some interviews, and there's this whole conversation that everyone has around how incredibly warm and amazing Shah Rukh Khan is. That he's the person that is star of the century and whatnot. But if you go to his house and you have a meal with him, and he just makes you feel like family, and he drops you home. Everyone says that. छोड़ने आते गाड़ी के. Yeah. So to me, the idea is that someone that will make you feel like that, that's what they remember, right? Is more than anything is that he made us feel this way. And that's what makes him really King Khan. That's what makes him sort of the king of hearts for that reason. ये जो stardom का point है. इसमें मैं भी कुछ बोलना चाहूँगा. See, I have not really hung out with a lot of star kids in life. In fact, I don't even know a lot of people who are called star kids. I've shot with Abhishek, but I've never hung out with him. That was during Breathe. तो ये जो चीज अवंतिका बता रही है, ये खुद अवंतिका भी करती है. इसके घर पे मैं 2-3 बार गया हूँ. जितने भी लोग हैं वहाँ, जो भी जा रहा होता है, अवंतिका and her brother. I had never experienced it in my life,
हम लोग दिल्ली से हैं, मतलब हाँ रिश्तेदारों को नीचे छोड़ने जाते हैं, बट अगर 20 लोग आए हुए हैं तो मतलब आई एम नॉट गोइंग टू गो एंड बिकॉज आई हैव टू टेक केयर ऑफ अदर पीपल आल्सो, नो. करेक्ट. दीस गाइस, ये जो भी जा रहा है, दे विल सी देम ऑफ, दे लाइक. तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये तो पूरा टाइम बाहर ही बिता रहे हैं, यू नो. एंड दे जेन्युइनली, आई मीन, तुम लोग यार वन ऑफ द बेस्ट होस्ट्स आई हैव एक्सपीरियंस इन बॉम्बे एटलीस्ट. सो हाँ, ये जो what she's talking about SRK, they are themselves like that. I think वो value system है जो you know gets carried forward from generations, and I've heard a lot of good stuff being said about her mother as well on a similar note. She's also being equally warm and gracious. So I think it's something that she has learned as a value system, right? We're talking about stardom. Shows like Pictures, Aspirants, etc. made you huge, right? And मैं personally देखो ऐसे, because सब लोग at the end of the day it's entertainment, screen कुछ भी हो, काम एक्टिंग का वही होता है. एंड shows like those made you a star as far as you know that particular medium is concerned, right? But आपको bifurcate करके कभी ऐसा बोला गया कि नवीन, you're doing great stuff, you're an OTT star, you're not a movie star? आपको All ऐसा the बोला time, गया? यार. They don't think of me as an actor, they think of me as OTT. You know, sometimes they sit with me and they talk to me about OTT. कि OTT, मैंने कहा यार ये बड़े प्रोड्यूसर वाले क्वेश्चंस है ना. तो मेरे से एक्टर की बात करो, यू टॉक अबाउट द कैरेक्टर आई हैव प्लेड. इनफैक्ट इन लॉट ऑफ केसेस दे हैव नॉट इवन सीन माय शोज, दे जस्ट अवेयर ऑफ माय एग्जिस्टेंस. मुझे अभी लॉट ऑफ टाइम्स आई फील दैट पीपल हैव जस्ट गॉन ऑन IMDb टू चेक व्हाट ऑल हैज ही डन. तो उनको दिखा रहे इसने एस्पिरेंट्स कोटा ये वो किया है, तो एंड दे विल पुट एवरीथिंग इन द सेम कैटेगरी. तो हाँ, मुझे ऐसा खुद लगता है कि हमारा मीडिया खुद बहुत स्टार और उनसे ऑब्सेस्ड है, यू नो. बहुत ऐसा, यू नो, स्टोरी फ्रेंडली, स्क्रिप्ट फ्रेंडली मीडिया इतना नहीं है, शायद. दिस इज व्हाट आई थिंक, बिकॉज दे माइट बी अवेयर ऑफ माय एग्जिस्टेंस बट दे हैव नॉट रियली सीन माय वर्क, मोस्ट ऑफ देम. एंड बट हैव यू रीच्ड दैट स्टेज ऑफ एक्सपीरियंस वेयर आपको पता चल जाता है कि कौन मेरा काम जेन्युइनली देखा है, तब जाके बोल रहा है, कौन ऐसे ही बोल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. अगर कोई किरदार की कहानी की बात कर रहा है और यू नो और आपको मिलके पता लग जाता है कि इन्होंने दे हैव सीन योर शोज, दे एक्चुअली नो अबाउट योर एग्जिस्टेंस. तो हाँ, तो वो ये तो होता है कि बहुत OTT करते हैं, लेकिन करते वक्त मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ कि ये, मैं तो उसको स्क्रिप्ट की तरह ही देख रहा हूँ, यू नो. So it's a script, it's a story which is going to come out in a form of, you know, fiction, and yeah, I don't maybe. तो हाँ, मैं तो ऐसा, मैं as an actor ही approach करता हूँ, तो मुझे नहीं पता कि ये OTT है या. Interesting. You know, season 2, of course, when season 1 ended, it had a different layer to it. आपके और हुमा के जो कैरेक्टर थे उसमें, you know, there was a टकरार and all that stuff. Season 2 में there are a lot of expectations, of course. I know you can't reveal the story because वो अभी भी आना बाकी है, but what is perhaps that one thing in terms of approaching your character जो आपने differently किया? Because the first time when you did it, you were doing it for the first time, right? Correct. Second time when you are doing it, you have already lived that character. कुछ अलग होता है in terms of mindset? I mean, in a way, yes, obviously, because अब season 1 में she's had this journey, she's gone through all of these experiences. She had a family that she yearned for that ended up betraying her, sending her to jail. Season 2 picks up from her being released from jail. तो आप जब एक character को approach करते हो, you think about all of these things, and you know, all of these experiences make them who they are, as any of us humans do. So there was a sense of impulsivity to Riya in season 1, where season 2 it's a lot more sort of focused, more determined. She's externally and internally stronger than who she was in season 1. Season 1 she was young and brash and, you know, trying to do all of these things. In season 2 also she's in that same zone, because at the core that's who she is. But her approach is obviously slightly more, she's more cunning, she's more planned, she strategic. And she is even a bigger risk taker for that matter. Her thought process has evolved from small things that she used to do in small ways to sort of, you know, grab attention or pull revenge, to much bigger things and much bigger plans. So that was the idea, that you have to keep the core the same of who this person is. You can't completely change that and, you know, be like suddenly ki, oh, I love my daddy and I'm oh so sweet. You can't do that. Correct. But ये सब जो हुआ है उसके साथ, how does it now influence her, who she is as a person? As far as
कैरेक्टर ब्रीफ इज कंसर्न, यू नो एक्टर्स यूजुअली अगर पहले से उस चीज में नहीं रहते, कभी कभी दे मेक अ कैरेक्टर स्केच अकॉर्डिंगली, उस हिसाब से दे अप्रोच इट. डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट वेज ऑफ अप्रोचिंग इट. व्हाट इज योर perhaps the mathematics that you apply in terms of approaching a character? Because do you take it as a science or do you take it as an art? And when I say science, I mean, you know, doing a lot of method preparation, this, that. And when I talk about art, I talk about, you know, going with the flow and letting things come your way the way it is. What is your style, which perhaps is something that describes your style the most? See, mix of both. It's mix of both. जितना टेक्निकल है वो आप तैयार कर लेते हो शायद. Like learning your lines is the most important thing. I feel हम जितना मेथड की बात करें, किरदार को समझने की बात करें, किरदार मुझे तो करते करते ही समझ में आता है. मैं बहुत पहले से बहुत सारे रूल्स नहीं बना लेता हूँ. You know, for the first few days you're also exploring scene by scene. Correct. फिर कुछ समझ में आने लगता है. एंड हाँ, फिर वहाँ पे आई थिंक आर्ट का रोल है. आपने बेसिक्स कर लिए हैं एंड देन यू गो विद द फ्लो. इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर को एक्टर्स, योर डायरेक्टर्स, योर लोकेशन. तो वो करते करते बनता है. मैं उसको आई डोंट यू नो लाइक किसी दायरे में उसको, किसी बॉक्स में उसको डाल के मतलब ऐसा फिक्स नहीं कर देता हूँ कि दैट्स हाउ ही शुड बी. यही ही विल बिहेव लाइक दिस ओनली. You know, he's an intense guy. He's not going to smile. He'll always be brooding. It's never like that. I mean, I also try and go with the flow because script character banati hai, you know. Sometimes you're also not aware of how is he. ऐसा भी हुआ है. मैंने शो देखा है तो मुझे अपना कैरेक्टर समझ में आया. अरे बाप. और शो देखा है और कंफ्यूज हो गए. नहीं ऐसा हुआ है. मैंने कहा ओह दिस इज व्हाट माय डायरेक्टर वाज आस्किंग मी टू डू. यू नो, क्योंकि आप बहुत आइसोलेशन में अपना पार्ट देख रहे हो एंड द मेकर इज लुकिंग एट द होल पिक्चर. करेक्ट. सो बहुत पहले ऐसा होता था कि आई वुड बी लिटिल रिजिड ऑन सेट एंड बिकॉज आई हैड इमेजिन थिंग्स इन माय हेड कि दैट्स हाउ ही शुड बी. एंड देन आई वुड यू नो क्वेश्चन द डायरेक्टर, अरे यार ये ऐसा थोड़ी करेगा, ऐसा करेगा. बट अभी इफ ही वांट्स मी टू डू समथिंग, मुझे वो कन्विक्शन से करना है. बाकी लिखा हुआ है राइटर ने. वो इफ आई स्टिक टू एवरीथिंग दैट्स रिटन ऑन पेपर, कैरेक्टर अपने आप बनेगा. You know, this is what I think. Yeah. You know, as far as being upfront and honest is concerned, आप इंटरव्यूज में बोलो या फिर सोशल मीडिया पे बोलो, मुझे आपका एक ऑनेस्ट अप्रोच दिखता है. एंड आई हियर दैट एक बार आपके शो में, आई विल नॉट टेक द नेम ऑफ द अवार्ड शो, आई विल नॉट टेक द नेम ऑफ द शो एज वेल, बट देन आपने बोला था ऑन स्पॉट कि यार हम लोग ने तो कॉमेडी बनाया ही नहीं, तो उसको कॉमेडी का अवार्ड कैसे दे सकते हो? उस चीज को लेके ट्रेजेडी बनाया था हम लोग ने. व्हाट डू यू हैव टू से टू दीज अवार्ड्स? बिकॉज आई वांट टू अंडरस्टैंड कि कभी कभी ये जो कैटेगरीज बनाया जाता है, डू यू रियली फील कि वो जस्टिफाइड होता है? किस बेसिस पे बनाया जाता है? एंड डू यू रियली फील द क्रेडिबिलिटी ऑफ अवार्ड्स ओवरऑल has really come to a question in today's time? And when I talk about awards, I'm not talking about, you know, a particular award. Overall. हाँ, इसी अब तो बहुत सारे अवार्ड्स हैं. I mean, बहुत सारे अवार्ड्स हैं and हमें भी पता है कि मतलब they've been spoken about by a lot of people. आपको मिलता है तो आपको अच्छा लगता है, but I don't think उनका उतनी वो credibility है आज की डेट में, you know, because सभी को बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं और दुनिया भर के अजीब अवार्ड्स मिल चुके हैं. बट स्टिल हाँ, इफ यू गेट वन यू फील गुड अबाउट इट. एंड आई मीन दे आल्सो से ना इट्स मोस्टली फॉर द ऑडियंस. यू नो, यू वुड वांट मैक्सिमम स्टार्स टू अटेंड इट सो दैट मोर पीपल वॉच इट. ऐसा भी हुआ है. आई हैव बीन टू अवार्ड फंक्शंस एंड उसमें एक मिनट के लिए कोई स्टार आता है, उनको कोई वो फनी सा अवार्ड देते हैं, दे टेक इट एंड देन लीव. ऐसा तो होता ही नहीं है कि यहाँ के आप एक साथ बैठ के पूरा अवार्ड फंक्शन अटेंड कर रहे हो. करेक्ट. सो हाँ, it's a maybe it's a TV show. So that's about it. हाँ, I don't think anybody takes awards seriously. I mean, what do you think, Avantika? No? She has a similar feeling. Maybe she'll give a descriptive feeling later. अभी हमारे पास time constant है, so if you, I mean, if you get a nomination, I feel like he said everything that you need to. So yeah. You feel happy about it. I mean, ego boost है वो कि अरे nomination मिला, आप इंस्टा पे थोड़ा शोर मचा दो, कह रहे I got a nomination. But ठीक है. अभी ऐसा भी है कि अभी अच्छा चुप हो जाता हूँ. ठीक है, enough.
नहीं दिल खोल के बात करना है, that is what it is. Okay, फिर से जेल ना हो जाए. नहीं क्या बात कर रहे हो यार, कभी नहीं. But then do you remember any particular compliment say Mithya season 1 के premiere पे some big star or maybe anybody who gave you, because it was very much your वो होता है ना पहला वाला जिसको बोलती हो call your very own baby, right? Yeah. So any special compliment that you remember which stayed true to you and even now in your heart to remember कि यार क्या बात है? Oh, yeah, okay. So my sport dada Mishra ji, somewhere over here, he also works with Farida Jalal. And there was one day where he randomly calls me up and he says, you know, मैम को आपसे बात करना है, उन्होंने मिथ्या देखी है, and आप बात करोगे? I said, हाँ, of course. And you know, she introduces herself and she says that, you know, I saw the show and you were absolutely fabulous, and you know, a whole list of compliments that she gave, and you know, details about the show that she watched. To me, that was just incredible. My day, week, month, everything was made because obviously it's the Farida Jalal. She's so good, a veteran, someone who's done, you know, body of work. Correct. And it's not like, oh, she met me at a party or an event or something where she just happened to say this. The fact that she made this connection and said, no, you know, ring her up. उन्होंने वो effort डाला. हाँ, कि मुझे उनसे बात करनी है. To me, that was just so lovely, and obviously to receive compliments like that from her, that effort from her. Yeah. How sweet. Last 2 questions quickly मैं wrap up करूँगा आप दोनों के साथ, मुझे इशारे दिए जा रहे हैं यहाँ पे. So ये है कि सोशल मीडिया पे एक चीज था, एक इंसिडेंट, अगेन फनी इंसिडेंट हुआ था, विच आई बिलीव यू हैड डन इट इन गुड ह्यूमर, बट देन उसको लेके लोगों ने बनाया था उल्टा सीधा. इट वाज अबाउट दैट फैन वाला इंसिडेंट विच आई रिमेंबर. आपको वैलेंटाइंस डे के पहले पूछा गया था कि नो आप चलोगे कि नहीं, हमारे साथ बिताओगे कि नहीं, एंड यू सेड समथिंग व्हिच वाज वेरी नॉर्मल एंड फनी. What did he say? He said something like कि मिलते तो बहुत है बट मन पसंद मिलना चाहिए. पता नहीं, मैंने एक बार एक कोई ट्वीट लिखा था कि हाउस हंटिंग का रिलेटेड. आई वाज लुकिंग फॉर अ हाउस, द हाउस हंटिंग बिकम्स अ ह्यूज स्ट्रगल ना कई समटाइम्स. तो मैंने लिखा घर ढूंढो, रोल ढूंढो, लड़की ढूंढो, उफ ऐसा करके लिखा मैंने. तो फिर देन सम गर्ल रिस्पोंडेड टू दैट कि अरे दिस वैलेंटाइन लेट्स बी टुगेदर, एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी. अरे तो मैंने लिखा मिल तो सब रहा है, मन पसंद का चाहिए. तो very shocked with the kind of backlash that you got for that. What, you got backlash for this? Yes, they were. इसके लिए क्यों backlash? अभी इसमें क्या है? I thought I got a lot of support for this. Zakir also retweeted it, yeah. Retweet किया गया, लेकिन लोगों ने in terms of say articles बोलो etc. A lot of people. इनको कोई आइडिया नहीं है क्या backlash है. He is thinking अरे जाकिर ने मेरी कॉमेडी उसको पसंद आ गई, हो गया मेरी बात. तो मुझे backlash मिला हुआ है, वो मुझे पता है backlash है. एक चीज के लिए मतलब मुझे death threats वगैरह ये सब हुआ है. Guys, that's it with Mithya season 2. Thank you so much. Please give them a lot of love and you know, ढेर सारा प्यार they definitely deserve in the true sense of the term. And that's it on my YouTube channel. Thank you. And Z5 में आ रहा है Mithya season 2 only on 1st November. Any special message for the fans? Please catch us on the 1st November on Z5 to watch Mithya season 2, which is He got it all. What? Sorry. आ रहा है 1st नवंबर को आ रहा है, देख लो. पहले भी आया है, Z5 में आ रहा है, और ज्यादा हिट बना दो. That is what it is. Thank you so much. God bless. Take care. Stay safe and thank you.